चलिए जी, हम कर रहे थे बेटा सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन में लास्ट टाइम वी हैड डन कार्डियक साइकिल, है ना। कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन अतिभा कितनी होती है बेटा? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड्स, वेरी गुड। ठीक है जी। और उसमें कौन से 3 फेजेस होते हैं गुंजन? Atrial systole, ventricle systole and joint diastole. जॉइंट डायस्टोल, बिल्कुल ठीक है। कृषा बेटा, जॉइंट डायस्टोल की ड्यूरेशन कितनी है? 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड्स, आपको याद है, ठीक है जी। चलिए, एंड सरगम बेटा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की कितनी ड्यूरेशन है? हम 0.3 सेकेंड्स। वेरी गुड। व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट अतिभा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्डियक आउटपुट? 70 ml। वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट एक हार्ट बीट में एक हार्ट बीट नहीं, मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो करता है थ्रू हार्ट, फ्लो आउट। सरगम आप बताओ बेटा। मैम 5 liters। yes, it is about 5000 ml, 5 liters to 5.2 liters। ठीक है, तो दिस इज द 70 into 70 कर लें अगर हम, तो तब आ जाता है 70 into 72 या 75 से करें तो ये आ जाएगी। इट इज 5000 to 525250 ml, या 5 लीटर से लेके 5 लीटर्स टू 50 ml वॉल्यूम जो है, इट इज द कार्डियक आउटपुट। उसके बाद इन द लास्ट वी हैड डन हार्ट साउंड्स। मैंने आपको बताया था इट इज मेजर्ड बाय या इट इज हर्ड बाय स्टेथोस्कोप, एंड 2 हार्ट साउंड्स होती है, लब एंड डब। लब को हम कहते हैं first heart sound. It is due to closure of AV valves, bicuspid and tricuspid valves at the start of ventricular systole. Dub, second heart sound. Due to closure of semilunar valves. It occurs at, it is heard at end of ventricular systole. These are the 2 heart sounds, लब and dub. जो लब है, it is low pitched, मतलब बहुत लाउड नहीं होती है, low pitched, not very loud. But is of longer duration. किसके कंपैरिजन में बेटा? डब के कंपैरिजन में इसकी ड्यूरेशन ज्यादा है, और ये उल्टा हो जाएगा। हाई पिच्ड साउंड but is of less duration.
इसकी ड्यूरेशन जो है वो कम होगी। टाइम पीरियड जो है ये लव लव इस तरह से जो है ना ये आवाजें सुनाई देती है, लब एंड डप की। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए। एक डिजीज होता है बेटा हार्ट मर्मर। इसमें कैसे आवाज आती है? लब फिर इस तरह की आवाज आती है, लब फिर इस तरह। कॉज्ड ड्यू टू डैमेज ऑफ semilunar valves. It is caused due to damage of semilunar valves. और ये डैमेज क्यों होता है? ड्यू टू साइफिलिस, एक डिजीज है ड्यू टू साइफिलिस और rheumatic fever. It is caused due to syphilis or it is caused due to rheumatic fever etc. तो इसमें क्या डिस्टर्ब्ड साउंड आती है, दैट इज लब करके आती है। इट लीड्स टू लीकेज ऑफ ब्लड, इट लीड्स टू लीकेज ऑफ ब्लड। जब पूरी तरह से ढक्कन बंद नहीं होगा तो लीकेज ही होगी। लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम pulmonary trunk या pulmonary arc and aorta. It leads to leakage of blood from pulmonary arc and aorta. जिनके मुंह पर, जिनकी ओपनिंग पर ये वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है जी। These are heart sounds. उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक हार्ट। myogenic and neurogenic heart। क्या है ये मायोजेनिक का? क्या मतलब है बेटा? हमारा जो हार्ट है अगर उसके नर्व सप्लाई कट कर दी जाए तो हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग व्हेन द एक्शन पोटेंशियल, ध्यान से पहले सुनो फिर लिखना, कि जब एक्शन पोटेंशियल या द इंपल्स फॉर contraction of heart is generated by muscles themselves, it is called as myogenic heart. Whereas if the action potential for contraction of heart it originates at the brain, it is called as neurogenic heart. लिख लो myogenic heart. The normal activities of the heart are regulated intrinsically, which means that the action potential for the contraction of heart, action potential for the contraction of heart is generated by heart muscles itself.
then the heart is called as myogenic heart. Heart is called as myogenic heart. For example, heart of vertebrates and heart of some mollusks, सभी में नहीं, some mollusks, it is myogenic heart. In invertebrates का क्या मतलब है? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता. In invertebrates such as earthworm, insects, etc. The wave of impulse for contraction of heart originates in brain. So it is controlled by brain. अगर brain damage हो गया, brain की nerve कट कर दी, तो heart beat बंद हो जाएगी. ठीक है? Such heart is called as neurogenic heart. Such heart is called as neurogenic heart. In humans, as I had told you earlier also, SA node, the specialized patch of cardiac muscle fibers, आपने पूरा लिखना है. SA node क्या है? Specialized patch of cardiac muscle fibers is most autorhythmic. Is most autorhythmic structure. ठीक है, और इसका मतलब बताया था मैंने, which generates the fresh impulse after every 0.8 seconds. Which generates the fresh impulse after every 0.8 seconds. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट. ठीक है जी, तो न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक का मतलब आपको पता चल गया. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. बेटा जब वो एसए नोड है, ठीक है, वो तो अगर उसको कोई नर्व सप्लाई ना हो तो हर 0.8 सेकेंड्स के बाद वो फ्रेश इंपल्स करेगी. बट कभी अभी हम भाग के आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, हमारी बॉडी को ब्लड एक बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी. उसके बाद अगर हम बहुत रिलैक्स्ड है, रात को सोई हुई है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो हार्ट बीट नॉर्मल से थोड़ी कम हो जाएगी. अब ये कम और ज्यादा कौन कर रहा है? ये नर्वस सिस्टम कर रहा है. ठीक है, अदरवाइज अगर हार्ट को नर्व सप्लाई से कट करें तो एक कांस्टेंट 0.8 सेकेंड से हार्ट बीट चलती जाएगी. बट at different times of the body या at different times of the metabolism, there is sometimes more oxygen is required, sometimes less oxygen is required.
Therefore, the rate of heartbeat varies at different times. And this variation is caused by the, nervous system, which activates the SA node or which inhibits the SA node. ठीक है? तो लिखो इसमें. Although the origin of heartbeat, although the origin of heartbeat is done by heart muscles itself, but the rate of heartbeat can be changed. Rate of heartbeat can be altered with the help of nerve supply. At the time of stress or high physical activity, at the time of stress and high physical activity, rate of heartbeat increases. Rate of heartbeat increases. Whereas at rest, the rate of heartbeat decreases. Heart is supplied by sympathetic nerve fibers and parasympathetic nerve fibers. Sympathetic nerve fibers stimulates SA node to increase rate of heartbeat. To increase rate of heartbeat. Parasympathetic nervous system inhibits SA node. Parasympathetic nervous system decreases the rate of heartbeat by inhibiting SA node. By inhibiting SA node. ठीक है, यहाँ पे लिखो दे, नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स alters the speed of conduction of nerve impulse, alters the speed of conduction of action potential, कर लो ज्यादा ठीक है, alters the speed of conduction of action potential from SA node to the rest of the, from SA node to rest of the heart, and thereby alters the rate of heartbeat and thus alters cardiac output.
thus alters cardiac output. Next है in addition to nerve supply, the rate of heartbeat is also controlled by या regulated by hormone adrenaline secreted by adrenal medulla. It increases rate of heartbeat. It increases rate of heartbeat. Adrenaline जो है, it increases rate of heartbeat. The center in the brain which alters the rate of heartbeat through sympathetic and parasympathetic nerve fibers is medulla oblongata. The center in the brain which regulates the rate of heartbeat through sympathetic and parasympathetic nerve fibers is medulla oblongata. बाकी का कृषा आप लिखो फटाफट से. उसके बाद हार्ट बीट क्या है बेटा? हार्ट बीट क्या चीज है बेटा? कंप्लीट, या हम कहेंगे वन कंप्लीट साइकिल ऑफ contraction and relaxation of all chambers of heart. It is called as heartbeat. ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी 0.8 seconds. Rate of heartbeat it is 70 से लेके 75 times per minute. Regulated by, मैंने अभी आपको बताया, regulated by medulla oblongata through sympathetic and parasympathetic nerve fibers, as well as by adrenaline hormone. Rate of heartbeat increases
when body requires more blood supply. More blood supply. Increase in the rate of heartbeat. Increase in the rate of heartbeat above normal. Above normal is called as tachycardia. Tachycardia. मैम रिपीट करना वर्ड. In tachycardia, TACHY cardia. Whereas decrease in the rate of heartbeat below normal. Decrease in the rate of heartbeat below normal is called as brachycardia. Is called as brachycardia. नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ, इसी में ही आ जाइए. ओरिजिन ऑफ हार्टबीट. ऐसे नोट. कंडक्शन ऑफ heartbeat. SA node to AVN, auriculoventricular node to bundle of his to Purkinje fiber. आप पूरा लिखना. SA node, AV node, bundle of his and Purkinje fibers. And Purkinje fibers. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पल्स. पल्स बेटा आपको पता है कि मैंने आपको कहा था अगर यहाँ पे लगा के देखेंगे, लगा के देखो कहीं ना कहीं कान के पास आपको थ्रोम्बिंग सी नजर आएगी, या इधर लगा के देखो, करके देखो दिख रहा है कि नहीं. कहीं पे दिख जाएगी आपको. ऐसे करके अप डाउन ऐसे ऐसे थ्रोम्बिंग आवाज आएगी. दैट इज पल्स. तो पल्स क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन and relaxation. It is contraction and relaxation of the atrial wall. Of the atrial wall is called as pulse.
of the atrial wall is called as pulse, P-U-L-S-E. It can be observed as at superficial arteries. It can be observed at superficial arteries. That is why it is called as arterial pulse. जैसे ही ब्लड आएगा इसमें, जैसे ही ब्लड आएगा, it becomes like this. और फिर इसके बाद it becomes like this. हम तो एक ही जगह पे देख रहे हैं, तो एक ही जगह पे पहले फूला फिर कम हुआ, फिर फूला फिर कम हुआ, फिर फूला फिर कम हुआ. हमें ऐसे थ्रोम्बिंग वॉइस या थ्रोम्बिंग एक्टिविटी नजर आती है. It is called as arterial pulse. It is same as that of rate of heartbeat. Rate of pulse is same as that of rate of heartbeat. Generally, but during emotional disturbances, there is increase in the rate of pulse. But due to emotional disturbances, डर गए, एक्साइटमेंट हो गई, दुख हो गया, डिप्रेशन हो गया, rate of pulse increases. Exercise also increases rate of pulse. Exercise also increases rate of pulse. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ब्लड प्रेशर. It is measured by instrument pygmanometer. It is measured by the instrument pygmanometer. Again, it is measured in arteries. Ventricles contract. More blood is pumped in arteries. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पंप ज्यादा होगा, तो ब्लड प्रेशर, देयर इज मोर ब्लड प्रेशर. क्योंकि ये वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. एंड इट इज इक्वल टू 120 mm of mercury. ठीक है जी. सेकेंड है when the ventricles relax. ये फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड लिखो रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. लेस ब्लड इन द आर्टरीज, क्योंकि आगे चला गया, वेन्स में चला गया, आर्टरीज में तो कम रह गया. लेस ब्लड इन द आर्टरीज. एरो डालो. लेस ब्लड प्रेशर एंड इट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक, क्योंकि आर्टरीज क्या हो गई, रिलैक्स हो गई है. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड इट इज इक्वल टू 80 mm of mercury. So blood pressure is
systolic BP over diastolic BP 120/80. 120/80. Increase in blood pressure higher than the normal. Increase in blood pressure higher than the normal is called as hypertension. Is called as hypertension. The increase in mainly diastolic blood pressure. Increase in mainly diastolic blood pressure is more dangerous. क्योंकि पहले ही आर्टरीज तो रिलैक्स्ड है, फिर भी प्रेशर ज्यादा आ रहा है. Is more dangerous as compared to increase in systolic blood pressure. As compared to increase in systolic blood pressure. ठीक है जी. Generally, persistent pressure, generally persistent high pressure, that is 140/90 or more. Persistent high blood pressure of 140/90 or more shows hypertension. Shows hypertension. मैम इस लाइन की स्टार्टिंग क्या है? कहता है कि ब्लड प्रेशर मोर देन ब्लड प्रेशर या परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर ऑफ 140/90 अगर डेली चेक कराएं और इतना या इससे ज्यादा आ रहा है तो हम 10-15 दिन चेक कराते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं इसको हाइपरटेंशन है. नहीं तो टेम्परेरी तो इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है. गुस्सा आ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, फिर ठीक हो गया. ठीक है जी. Hypertension is generally caused due to hypertension is generally caused due to फर्स्ट आ जाता है arteriosclerosis. Arteriosclerosis, that is hardening of the arterial wall. Hardening of the arterial wall, due to which the arterial walls cannot contract easily, cannot contract or expand easily. Second है thickening of the arterial walls. Thickening of the second, एक तो था arteriosclerosis, second है thickening of the arterial walls due to deposition of cholesterol. एक इतनी मोटी पाइप थी, उसकी वॉल थिक होगी, अब इतनी सी रहेगी, प्रेशर तो उतना ही है, ब्लड तो उतना ही है, तो ब्लड ज्यादा प्रेशर से जाएगा. इसकी वजह से क्या हुआ है?
lumen of arteries decreases. ल्यूमन मीन्स उसकी अंदर की कैविटी वो डिक्रीज कर जाएगी एंड दस ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस एंड दस ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस. नेक्स्ट है decrease in the blood pressure below normal is called as hypotension. Decrease in blood pressure below normal is hypotension. जनरल कॉज क्या है हाइपोटेंशन? किस किस कारणों से हो जाता है? क्लियर एलर्जी, which causes dilation of blood vessels. ब्लड वेसल सारी बॉडी की डायलेट हो गई, खुली हो गई. डायलेट मीन्स खुले हो जाना. ब्लड तो उतना ही है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा एलर्जी के कारण. ठीक है, हम एंटी एलर्जिक लेंगे तो ठीक हो जाएगा. तो कॉलरा, डायरिया, in which excess of water and salts are lost. पानी की वॉल्यूम जो प्लाज्मा है उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, ब्लड कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड में वाटर कम हो गया. ठीक है, इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर. और यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, हाइपोटेंशन या सडन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, सडन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर may leads to death. कोई भी इंसान कॉलरा डायरिया से नहीं मरता है. इतनी कॉलरा डायरिया होती है कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है. तभी हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, कॉलरा डायरिया का तो हम इंतजाम कर लेंगे, बट इसको ORS पिलाते रहो, ज्यादा हो जाए तो इसको ड्रिप लगा दो ताकि इसका ब्लड प्रेशर ना गिरे. सडन डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर may cause death if not treated immediately. If not treated immediately. नेक्स्ट आ जाता है बेटा डबल सर्कुलेशन. नेक्स्ट इज डबल सर्कुलेशन. और आपको ये थोड़ा थोड़ा सा पता है. पार्शियल डबल सर्कुलेशन in amphibians and reptiles हमने शुरू में किया था. Whereas complete double circulation, जहाँ पे complete 4 chambered heart है, it is present in birds and mammals. तो डबल सर्कुलेशन क्या है? When blood flows through heart twice. Twice
in one circulation. When blood flows through heart twice in one circulation, it is called as double circulation. ये आपको पता है? Two circulations are. कौन सी है double circulations? One is pulmonary circulation and another is systemic circulation. Pulmonary circulation and systemic circulation. आपको पता है बेटा, बॉडी से ब्लड कहाँ गया? हार्ट में गया. हार्ट से कहाँ पे गया? लंग्स में गया. लंग्स से फिर कहाँ आया? हार्ट में आया और हार्ट से बॉडी में. ठीक है जी. The flow of blood from body to heart and then again to body. Flow of blood from body to heart and again to body is called as systemic circulation. और फिर है बेटा राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे गया? लंग्स में गया और लंग्स से फिर हार्ट में आ गया. दैट इज लेफ्ट एट्रिया. या हम कहेंगे हार्ट, हार्ट से लंग्स में और लंग्स से फिर हार्ट में. दिस इज कॉल्ड एज pulmonary circulation. This is called as pulmonary circulation. ठीक है जी. थोड़ा सा हम इसको अगर बनाना ही हो 3 मार्क्स में आ ही जाए तो आप थोड़ा सा डिटेल में और कैसे बना सकते हैं. दैट इज बॉडी टू राइट एट्रिया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में आ गया. लंग्स से आके लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी में. This is pulmonary circulation and this is
systemic circulation. Pulmonary circulation and systemic circulation. Maximum blood remains in the या maximum blood flows in the systemic circulation. Maximum blood flows in the systemic circulation as it supplies blood to all the tissues of the body except lungs. बेटा फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में पार्शियल डबल सर्कुलेशन है, बर्ड्स एंड मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है. क्या फायदा है, सिग्निफिकेंस क्या है? नेक्स्ट लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन. Significance of double circulation. It separates oxygenated and deoxygenated blood. It separates oxygenated from deoxygenated blood and thus increases efficiency. क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर ऑक्सीजनेटेड होगा, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगी, तो इसलिए सेल्स ज्यादा काम करें. ठीक है जी. तो दिस इज डबल सर्कुलेशन. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्पेशलाइज्ड या स्पेशल टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन. स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेशन, इसमें आ जाती है बेटा पोर्टल सर्कुलेशन. जनरल क्या होता है बेटा? जनरल होता है बेटा arteries goes into tissues, वहां पे divide into capillaries, fuse to form veins, and veins pour deoxygenated blood generally in vena cava. Arteries, they divide to form capillaries, which fuse to form veins, and veins pour blood in vena cava. ये जनरल है. पोर्टल सर्कुलेशन, ह्यूमंस में दो टाइप की है. वन इज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, और दूसरी है हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन. वन इज हेपेटिक सर्कुलेशन, सेकंड है हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन. हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, पहले ये देखो बेटा, हेपेटिक का मतलब होता है लिवर. ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, दोबारा से इस टॉपिक में बता रही हूँ. तो होता क्या है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में?
hepatic portal vein arising from small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन से हेपेटिक पोर्टल वेन अराइज होता है, कैरिंग मैक्सिमम ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अगर जनरल हो, एक रूल के मुताबिक हो, तो वो क्या होनी चाहिए, वेन वीना कावा में खुल जानी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट कम्स आउट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन and enters in liver. लिवर में divides into capillaries in liver and pour nutrients in hepatocytes for further processing. लिवर ने उस खाने का क्या करना है, ये उसको पता है। हेपेटिक पोर्टल वेन ने डाइजेस्टेड फूड लिवर सेल्स को दे दिया। capillaries fuse to form hepatic vein, जो फिर comes out of liver and pours blood in inferior vena cava. Pours blood in inferior vena cava. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक क्यों कहा, क्योंकि वो लिवर में जा रही है। इट अराइज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पोर्स ब्लड इन अनदर ऑर्गन बिफोर पोरिंग इनटू वीना कावा। ये है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। मैं इसके बाद पोर्टल सर्कुलेशन की डेफिनेशन लिखवाती हूँ। उसके बाद है हाइपोफाइजियल, ये भी देखो जरा। टू hypophyseal portal veins arise in hypothalamus. उसके बाद enters in anterior lobe of pituitary. Pours releaser hormones in cells of pituitary. Then comes out as hypophyseal vein and pours blood in superior vena cava. क्योंकि ये कहाँ पे, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट। ठीक है, लिखो इनका पैसेज लिख लो फटाफट से।
हो गया बच्चों? Yes, ma'am. तो लिखो पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? द सर्कुलेशन इन विच a vein from one organ, a vein arising from one organ does not pours blood in heart or vena cava, does not pours blood in heart or vena cava, but pours blood in another organ, but pours blood in another organ. It is called as portal circulation. It is called as portal circulation. ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा? हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में किया था. लिखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ hepatic portal circulation. Importance of hepatic portal circulation. Hepatic portal vein passes the digested nutrients to the liver. Passes the digested nutrients in the liver, where excess of glucose is changed into glycogen. Excess of glucose is changed into glycogen. Second is harmful amino acids. Harmful amino acids are neutralized or broken. Are neutralized or broken. Third है excess fats are deposited in adipose tissue. Excess fats are deposited in adipose tissues. Next Excess fats are deposited in adipose tissue. Next है alcohol, if present in the blood, is disposed of in liver. Alcohol, if present in the blood, is disposed of by liver. तभी जो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनका लिवर खराब हो जाएगा. जब उस पर बर्डन ज्यादा पड़ेगा तो वो खराब हो जाएगा. इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय लिवर एक्सेट्रा. ये कुछ फंक्शंस है जो लिवर करता है. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. तो हम यहाँ लिखेंगे द पिट्यूटरी ग्लैंड. Pituitary gland is under control of hypothalamus. Pituitary gland is under control of hypothalamus, which secrete various releaser hormones. Various releaser hormones which secretes various releaser hormones that act on pituitary gland. That act on pituitary gland. मैम हाँ जी. मैम आपने वेरियस के बाद क्या बोला था? various releaser hormones. Hypothalamus secretes various releaser. ये हम एंडोक्राइन में पढ़ेंगे तो क्लैरिटी होगी. Various releaser hormones that act on pituitary.
These releaser hormones reaches the pituitary. These releaser hormones reaches the pituitary through hypophyseal portal vein. रिपीट करना मैम. These various releaser hormones reaches the pituitary through hypophyseal portal veins. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, ये हमने कही थी एक स्पेशल सर्कुलेशन थी, पोर्टल सर्कुलेशन. सेकंड आ जाता है बेटा कोरोनरी सर्कुलेशन. कोरोनरी सर्कुलेशन बेटा हार्ट में से जब एओर्टा राइज होता है, हार्ट में से when the aorta it arises from the heart, then it divides into three blood vessels. ये एओर्टा राइज हुआ. मैम इट डिवाइड्स के बाद रिपीट करना. इट डिवाइड्स इनटू, आप कह सकते हो, थ्री मेजर आर्टरीज या थ्री मेजर ब्रांचेस. दिस इज ascending aorta, descending aorta, and arc of aorta. It divides into three major blood vessels, that is ascending aorta, descending aorta, and arc of aorta. These blood vessels further divide into various arteries. These blood vessels further divides into various arteries. Ascending aorta, इसकी एक ब्रांच है, a branch. क्या है? राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज. और भी ब्रांचेस होंगी बेटा, बट ये दो है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज. enters in cardiac musculature. कार्डियक मीन्स हार्ट के जो मसल्स है वहां एंटर कर जाते हैं, एंड डिवाइड्स टू फॉर्म कैपिलरीज. Exchange of gases, and nutrients between heart muscles and blood.
इसके बाद क्या हुआ? कैपिलरीज फ्यूज टू फॉर्म, क्या करेंगी, क्या बनाएंगी? कोरोनरी वेन्स। एंड कोरोनरी वेन्स fuse to form coronary sinus, and coronary sinus force deoxygenated blood in right atria of heart. ये आपको पता है, पूरा लिखना है coronary sinus. This is coronary circulation. This is coronary circulation. ठीक है जी, इज इट ओके? डन बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. तो आज हम यहाँ तक करें। हमारा थोड़ा सा बस अब इसमें क्या रह गया, आधे घंटे का काम अब हमारा है लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम एंड ईसीजी, ये रह गया। और नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है बेटा, ठीक है? एक तो ये सारा पढ़ के आना, ये तो है ही है। मैंने आपको क्या करवाना है, लिम्फेटिक सिस्टम, ईसीजी करवाऊंगी, 2 चीजें ये करवाएंगे। और तीसरा, आपने जो रेस्पिरेटरी हमने प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसकी जो असाइनमेंट की थी, उसके डाउट्स लेकर आना। इज इट ओके? Okay, ma'am. ठीक है Yes, ma'am. क्योंकि आपका Yes.